Good morning, dear students. I'm Bharti Kathuria Saigal from the SD Vidya School, Ambala Cant. Today, we are going to start with a new chapter, Heredity and Evolution. From Heredity and Evolution, for this year, CBSE has excluded the part Evolution. So, in this chapter, we will be dealing only with heredity now. So, let's start. So far, in the previous chapter, How Do Organisms Reproduce, we talked about reproduction and how variations are introduced during reproduction. Now we'll be talking about accumulation of variations during reproduction. Now, inheritance from the previous generation. You understand inheritance? Inheritance means transmission of traits from one generation to the next. So when the traits are transmitted, trait stands for the characteristics. कोई भी character जो है किसी organism का, कैसे बाल है, कैसा उसका hair color है, कैसा उसका eye color है, everything is called as, इन्हें हम कहते हैं इन features को inherited traits कहते हैं, जो कि आपके parents से आपके अंदर आए हैं और आगे इसी तरह से transfer होते रहते हैं. तो इस process को हम कहते हैं inheritance. सो इनहेरिटेंस से जो बेसिक बॉडी डिजाइन हमारा बॉडी डिजाइन है, अभी हम कह रहे हैं कि एक स्पीशीज व्हेन वन स्पीशीज reproduces, new ones will be the copies of the existing of the parents. अब ये क्यों हो रहा है? बिकॉज दे आर पासिंग ऑन देयर डीएनए टू द नेक्स्ट जनरेशन. तो जो नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म होगा वो एक्चुअली अपने पेरेंट से ही डीएनए लेकर फॉर्म हुआ है. तो बेसिक बॉडी डिजाइन उनके अंदर वही सेम रहेगा, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंसेस आते हैं और इन्हीं डिफरेंसेस को हम क्या कह रहे हैं? वेरिएशंस कह रहे हैं. सो द सेकंड जनरेशन विल हैव डिफरेंसेस दैट दे इनहेरिट फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन एज वेल एज द न्यूली क्रिएटेड डिफरेंसेस. तो जो नई जनरेशंस बनती जाएंगी उनके अंदर पहली वाली जनरेशंस वाले डिफरेंसेस भी आएंगे और नए वेरिएशंस और भी आते जाएंगे. सो दिस इज हाउ द वेरिएशंस विल कमिंग और धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी. दे विल कीप ऑन इंक्रीजिंग विद ईच जनरेशन. सो एक एग्जाम्पल दे रखा है आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर ही, उसी का एक एग्जाम्पलर वर्जन हमने यहाँ पर लिया है. आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दे रखा है on the first page of the chapter number 9, heredity and evolution. This is page number 142. तो पेज नंबर 142 पर एक डायग्राम दे रखा है which is figure 9.1, जहां पर आपको बता रखा है कि किस तरह से धीरे धीरे वेरिएशंस आ रही हैं. तो यहाँ पर उसी का एक एग्जाम्पलर वर्जन देखते हैं हम. तो आप ये देखिए, सपोज करिए कि ये एक ह्यूमन बीइंग है, राइट? इसके अंदर अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं. When it reproduced, it is producing two offspring. इसके दो offspring हुआ. Offspring means the children. कितने बच्चे हुए उसके. अब हर एक बच्चे में एक एक तरह की उसके अंदर उसके पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स भी आए. बेसिक बॉडी डिजाइन देखिए सेम है, लेकिन कुछ कुछ वेरिएशंस आई जो कि एक ऑफस्प्रिंग में अलग है और दूसरे ऑफस्प्रिंग में अलग है. अब ये जो वेरिएशन उसमें आई उसने नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन कर दी, प्लस बेसिक बॉडी डिजाइन वही का वही रहा और कुछ और वेरिएशंस आती रही जो नेक्स्ट जनरेशन में आती रही. यहाँ पर कुछ और नई तरह की वेरिएशंस आ गई. सो दिस इज हाउ द वेरिएशंस विल कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग. एक्यूमुलेटिंग मतलब जमा होती रहेंगी, धीरे धीरे बढ़ती रहेंगी वेरिएशंस, और इन्हीं से आगे क्या होगा? व्हाट वी कॉल एज एवोल्यूशन, which is accumulation of variations over long period of time which leads to altered body design. अब देखिए बॉडी डिजाइन चेंज हो सकता है यहाँ पर, या फिर आपके अंदर नए कैरेक्टरिस्टिक्स इंट्रोड्यूस हो सकते हैं. इस प्रोसेस को कहेंगे एवोल्यूशन. सो आप डिस्कस करते हैं हेरिडिटी के बारे में. So heredity क्या है? It is the passing of traits. Traits I told you, traits means characters, to offspring from its parents or ancestors. This is the process by which an offspring cell or organism acquires or becomes predisposed to the characteristics of its parent cell or organism. So it may be a unicellular organism or it may be a multicellular organisms. The characters will be passed on from one generation to the next. And this is what we call as heredity. Now let's discuss about Gregor Johann Mendel. Gregor Johann Mendel is known as the father of genetics. Genetics is the branch of biology which deals with these variations and the passing of characters. So heredity and variations की जो study है, that is called as genetics.
एंड बिकॉज ही वॉज द वन जिन्होंने इससे रिलेटेड सबसे पहले लॉज दिए और सबसे ज्यादा इसके बारे में स्टडी करके सबसे पहले इस फील्ड को इंट्रोड्यूस किया, सो ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगर जोहान मेंडल. So Gregor Johann Mendel, he was a German-speaking Celestian scientist, and he was posthumous. Posthumous means after his death, he was named as the father of genetics, as the founder of the new science of genetics. Now Mendel worked out the rules of inheritance. So laws of inheritance आज भी जो हम पढ़ते हैं वो actually they were given by Gregor Johann Mendel. उसके बाद बहुत लोगों ने इसके बारे में स्टडी किया, लेकिन एक इंडिविजुअल ट्रेट्स को स्टडी करना और किस तरह से उसको आगे वो पास ऑन हो रहे हैं और किस तरह वेरिएशंस आ रही हैं और किस तरह उनके कंक्लूजन्स पर पहुंचना, to arrive at the laws of inheritance was his contribution to genetics. Mendel's experiments. Mendel used a number of contrasting visible characters of garden peas. So his experimental plant was garden pea. He performed his experiments on garden pea. And what characteristics did he take in consideration? Like round and wrinkled seeds, tall and short plants, white and violet flowers, and so on. So उसने अलग अलग फीचर्स को स्टडी किया, दो अलग अलग तरह के प्लांट्स लेकर, किसी में राउंड सीड, किसी में रिंकल्ड सीड, कोई टॉल, कोई शॉर्ट, कोई वायलेट फ्लावर, कोई व्हाइट फ्लावर, और उनको आपस में क्रॉस कराकर एंड ही मेड द कंक्लूजन्स कि किस तरह से कैरेक्टर्स आगे पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं. मेंडल ने पी प्लांट को क्यों यूज किया? उसके लिए कुछ रीजंस बहुत अच्छे उसने ही चोज दिस प्लांट. उसके लिए सबसे अच्छा रीजन क्या था? एक तो अभी जो हमने डिस्कस किया कि उसके अंदर विजिबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, मतलब टॉल एंड शॉर्ट आप देख सकते हैं उसको, इसी तरह से व्हाइट एंड वॉयलेट फ्लावर्स आप देख सकते हैं उसको. सो ही वाज इजीली एबल टू study those characteristics because they were visibly contrasting characters. They were visibly there and he could contrast between these characters. They were self-pollinating, they had a short lifespan, so he could perform self-pollination as well as cross-pollination on these plants. So Mendel's first experiment. He started with pure breed. Now what is this pure breed? Pure breed means a breed which has both the genes of the same type. So जिसमें दोनों के दोनों ही आपके पास genes एक जैसे होते हैं, which are coming from both the parents. दोनों parents से जो आपके पास दो अलग अलग टाइप के सेम कैरेक्टर के जीन आए, वो अगर एक जैसे हैं, that will be called as pure breed. So pure breed को उसने आपस में उनको क्रॉस किया और ऐसे कैरेक्टर्स को उसने ऐसे क्रॉसेस को बोला मोनोहाइब्रिड. नाउ अंडरस्टैंड दिस टर्म मोनोहाइब्रिड. बेटे मोनोहाइब्रिड का मतलब है दो प्लांट्स को क्रॉस कराना टू स्टडी ओनली वन कैरेक्टर. मोनो मीन्स वन, हाइब्रिड मीन्स क्रॉस. तो क्रॉस करवाया गया लेकिन सिर्फ एक ही स्टडी किया गया कैरेक्टर को एट ए टाइम. अगर उसने टॉल एंड शॉर्ट को किया तो सिर्फ हाइट को ही स्टडी किया. अगर उसने व्हाइट एंड वॉयलेट को किया तो सिर्फ फ्लावर कलर को ही किया. अगर उसने राउंड एंड रिंकल्ड सीड वाले प्लांट्स को आपस में क्रॉस किया तो उसने सिर्फ सीड का ही स्ट्रक्चर ही स्टडी किया और कुछ नहीं स्टडी किया. ऐसे क्रॉसेस को हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस. सबसे पहले जो उसने क्रॉस किया था, क्रॉस pollination किया था, that was between tall and short pea plants of pure breed. So his first experiment was to study the height of the plant when he crossed the tall pea plant with the short pea plant. So tall pea plant was crossed with the short pea plant, and what he concluded, what he got in the next generation was all the offsprings were tall. This he termed as the F1 generation, or what we call as the filial generation. First filial generation. First filial generation means the generation that we obtain from the parental generation after the cross of the parental. Now the first plants that you take are called as the parental, and after the crossing of the parental, the generation that you obtain is called as the first filial generation. Although in the parental plants he had tall as well as short, but in the filial generation 1 he obtained only tall plants. There were no short plants, although
there was a short parent, but in the case of filial generation 1, he had only tall offsprings. And when the plants of F1 were fully grown, he allowed them to self-pollinate. So F1 were able to self-pollinate, and after which he obtained the plants in the ratio of 3:1. 3:1 means 3 tall plants and 1 short plant. So the plants in the F2 generation were a mix of tall and short plants. So on the basis of this, he gave his first law of inheritance called as law of dominance. So look here, in the parental generation, he has performed cross-pollination between tall and short. In the first filial generation, there is a self-pollination between tall and tall plants. In the second filial generation, he obtained tall and short plants in the ratio of 3:1, in which 3 are tall and 1 is short. The result of monohybrid cross enabled Mendel to formulate the first law of inheritance, which is called the law of segregation. According to the law of segregation, the characteristics of an organism are determined by internal factors. Factors are what we now call as genes, which occur in pairs. So as we discussed in the previous chapter, the factors or the genes occur in pair, one obtained from each of the parent. Only one of a pair of such factors can be present in a single gamete, because gamete is coming from one parent, so each parent will give one copy of one gene, and such copies of genes are called as alleles. So like we discussed in the previous topic about tall and short, सो यहाँ पर जो आप लोग टॉल एंड शॉर्ट के लिए, बिकॉज टॉल एंड शॉर्ट फाइनली दोनों के दोनों ही डिनोट कर रहे हैं हाइट को, तो एक ही कैरेक्टर के दो ऑल्टरनेट फॉर्म्स को हम कहते हैं एलील्स. सो एलील्स आर द टू फॉर्म्स ऑफ वन जीन. एक ही जीन के दो फॉर्म्स हैं जिसको हम एक ही इंग्लिश अल्फाबेट से हम उनको इंडिकेट करते हैं. जैसे कैपिटल टी विल इंडिकेट टॉल हाइट and small t will indicate short height. So short height के लिए हम s यूज नहीं करेंगे, because s का मतलब यहाँ पर short नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक अलग ही कैरेक्टर हो जाएगा. यहाँ पर कैरेक्टर हम कौन सा ले रहे हैं? ओनली हाइट. सो हाइट के लिए सिर्फ एक ही लेंगे, which will be t. So capital T will be for tall height and small t will be for the short height. Right, so look here. So now you can understand this capital T indicates tall height while the small t indicates the short height. तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में हमने कहा था प्योर ब्रीड है. प्योर ब्रीड जिसे हम कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन है. सो होमोजाइगस कंडीशन में व्हेन द टॉल प्लांट, यहाँ पर क्या किया, उनको टॉल प्लांट्स को क्रॉस कराया है आपस के अंदर विद द शॉर्ट प्लांट के साथ. सो जितने भी प्लांट्स आए आपके पास टॉल है, लेकिन आप ध्यान देंगे तो सबके सब हेटेरोजाइगस हैं. हेटेरोजाइगस मींस दे हैव टू डिफरेंट एलील्स. एक है कैपिटल टी और दूसरा है स्मॉल टी, जिसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आपके पास हेटेरोजाइगस कंडीशन जिसमें दो अलग अलग एलील आ रहे हैं. ऊपर वाला पैरेंटल कैसे है? होमोजाइगस, दोनों एलील सेम है. यहाँ पर कंडीशन कैसी है? हेटेरोजाइगस कंडीशन है. अब यहाँ पर एलील्स कैसे बनेंगे? इसके गैमीट्स के अंदर वन कॉपी कैन गो. सो सेग्रीगेशन हो रहा है यहाँ पर, वन कॉपी विल गो टू ईच. जबकि यहाँ पर आपके पास कैसा आ जाएगा? नेक्स्ट जनरेशन में आपके पास आ जाएगा टॉल प्लांट, टॉल प्लांट, टॉल प्लांट. तीनों के अंदर ही यहाँ पर आपके पास टॉल हाइट आ रहा है. क्यों? क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है. डोमिनेंट का मतलब क्या हुआ? द वन विच इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ ऑलवेज. जो हमेशा एक्सप्रेस करेगा हम उसे बोलेंगे डोमिनेंट. लेकिन जो रिसेसिव होगा वो अपने आप को डोमिनेंट की प्रेजेंस में शो नहीं कर पाएगा. तो जो ये स्मॉल टी आप देख रहे हैं, ये है रिसेसिव कैरेक्टर. ये कैपिटल टी की प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इसीलिए हाइट कैसी आई है आपके पास? टॉल आई है. सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस, that some alleles are able to express themselves always
while others cannot.